takita takajum, tatikitatum, takita takajum, tatikinatum, takita takajum, kadakadagadam, takita takajum, kadakadagadam, takita taka, takita taka, takita taka, takita taka, takita taka, takita taka, tadinginatum, tadinginatum, tadinginatum. Ikkat or Ikkat is a dyeing technique used to pattern textiles that employs resist dyeing on the yarns prior to dyeing and then weaving the fabric. The technique is known as chitku in the local dialect of Telugu, Banda in Odia, and as patola in Gujarat. The earliest depiction of this textile is in Ajanta murals in Cave 1 of the 6th century. The technique of Ikkat spread from Gujarat and the Deccan along the Silk Route, with Buddhism to Central Asia. The exquisite and bold Ikkat fabric of Central Asia is known as Atlas and is often mentioned in Persian and Urdu poetry as a prize fabric. बाजे प्याला पिया जाए ना पिया बाजे प्याला पिया जाए ना पिया बाजे एक दिल जिया जाए ना पिया बाजे एक दिल जिया जाए ना पिया बाजे प्याला पिया जाए ना पिया बाजे एक दिल जिया जाए ना पिया बाजे प्याला पिया जाए ना takita takajum, tatikitatum, takita takajum, tatikinatum, takita takajum, kadakadagadam, takita takajum, kadakadagadam, takita taka, takita taka, takita taka, takita taka, takita taka, takita taka, tadinginatum, tadinginatum, tadinginatum. From the east coast of India, Ikkat traveled to Southeast Asia and Japan. Even found its way to parts of Africa and South America. Double Ikkats in which both the warp and the weft yarns are tied and dyed before woven into a single textile are relatively rare because of the intensive skilled labor required to produce them. They are produced in several centers of India, including Pochampally and in other parts of the world like Japan and Indonesia. In Patan, Gujarat, the double Ikkat or patola technique is the most evolving and highly priced export item. In Deccan it was a simpler technique, which was mostly used for square rumals made in Chirala.
They were mostly exported to Africa and Arabia, where it was used to make kafiyas and turbans. The telia rumal meant for the Middle Eastern market was worn primarily around the neck. It was only in 1950 that Kamla Devi Chattopadhyay, then the chairperson of the All India Handicrafts Board, convinced the weavers to translate the telia designs into saris. Three or four weaving centers emerged near Hyderabad, which started to weave yardage, saris, lungis and silk and cotton. Chirala, Pochampally, Puttapakka and Koyalagudam were given a new lease of life in the middle of the 20th century by the All India Handicrafts Board, as a result of which these and other nearby places have become important centers for the production of what is known as Hyderabadi Ikkats. Of these, the best known is Pochampally, where the Ikkat technique has been perfected in tandem with the Bhudan movement, and the village is known as Bhudan Pochampally. The earlier Pochampally Ikkat saris had only the borders and pallus with bands of Ikkat designs. Some of the simpler Pochampally saris are still worn in this style, which could go back to the Vijayanagar period. हमारा ये टाई एंड डाई का ये हमारा गांव में पोचमपल्ली गांव में बिफोर 50 ईयर्स से हमारा गांव में ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। अपने पास हमारा गांव में कम से कम आज ये टाई एंड डाई वेराइटीज के अंदर कम से कम 5000 के ऊपर व्यूवर्स ये आइटम के ऊपर डिपेंड होके सबको खाने का और ये कम से कम इधर जीने का लिए ये हमारा काम अभी यूज हो रहा है। ये हमारा काम में बहुत मेहनत रहता। In Ikkat, the resist is formed by binding bunches of yarns tightly in the desired pattern. These tied yarns are then dyed. The bindings may be altered to create a new pattern, and the yarns dyed again with another color. This process may be repeated multiple times to produce elaborate multicolored patterns. Because the surface design is created in the yarns rather than on the finished cloth, in Ikkat both fabric faces look similar. The weavers who are involved in creating Pochampally saris follow a particular way for weaving the saris. At first, the yarn for the warp and weft is stretched on the warping blocks in the form of a quarter circle. It consists of one strong peg connected with the circular segment of a wooden plank. These are studded with about 35 pegs. Then the thread is stretched on it and divided into a number of sets. The method of weaving Pochampally saris is done with tie and dye method. ये तेले रुमाल का डिजाइन है, सिर्फ ये वार्प में है, जो लेंथ वाइज डिजाइन का है। ये अगर ये डिजाइन वेफ्ट में बनाए तो डबल इकत होता है। अभी सिर्फ वार्प थ्रेड के साथ हम बना के रखा है। ये वेरी ट्रेडिशनल डिजाइन है, ये 100 ईयर्स ओल्ड पैटर्न है। इसका मल्लेपुव्वु मद्दिकाय बोलते। ये डिजाइन पुराना ज़माने में टर्बन के लिए इस्तेमाल करता था। ये नेचुरल डाई है, ब्लैक एंड मैरून। इसका पहले
बहुत ओनली रुमाल बनाता था। अभी इसमें ये डिज़ाइन को हम कन्वर्ट किया है साड़ीज़ में, ड्रेस मटेरियल में और स्कार्फ एंड स्टोल्स एंड दुपट्टा। इसका मार्केट अभी अच्छा है। ये 1980 में पपुल जयकर के साथ हम काम किया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए। बाद में इसका सबको मालूम हो गया ये तेली रुमाल ये पुटपाका में बनता है बोल के। जब तक इसका कोई पूछने वाला नहीं था, लोकल मार्केट में के लिए रहता था। तेली रुमाल का है ट्रेडिशनल तेली रुमाल डिजाइन इन डिफरेंट डिजाइन है इसमें। 100 मोटिव्स इन वन पीस। ये तेली रुमाल का यारन प्रोसेस ऑयल से होता है 21 डेज। बाद में हम डिजाइन बनाते। ये डबल इक्कत है, वार्प में डिजाइन, वेफ्ट में डिजाइन। ये पहले ज़माना में चीराला में होता था ऐसा सिमिलर डिजाइंस। ऐसा ये तेली रुमाल को डबल इक्कत में बहुत डिजाइंस बनाता था, बहुत मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग होता था। पहले ज़माना में अरब कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट होता था। The modernization of thought and choice has inspired the artisans to create modern motifs that are abstract, modernistic, and geometric, with plenty of brilliant colors. Before the weaving is done, a manual winding of yarn called asu needs to be performed. This process takes up to 5 hours per sari and is usually done by the women folk, who suffer physical strain through constantly moving their hands back and forth over 9,000 times for each sari. In 1999, a young weaver, C. Mallesham, developed a machine which automated asu, thus developing a technological solution for a decades-old unsolved problem. The machine brought the revolution in the weaver community, who were hitherto engaged in the manual asu process. Ministry of Textiles, Government of India has created a handloom park which has a weaving and design unit and a small museum. हमारा जो यूरोप कंट्रीज में और अमेरिका में स्टोर्स में ज़्यादा डिमांड है। और जो हमारा जो कपड़ा जो हैंडलूम पार्क में बनता है कम्प्लीटली आइसोफ्री कलर्स वी आर मेकिंग हियर। हम इधर बनाते हैं कम्प्लीटली आइसोफ्री कलर्स एंड इको फ्रेंडली कलर्स। जो जर्मन देश का जो स्टैंडर्ड चाहिए, उन लोगों को जो रबिंग फास्टनेस चाहिए, जो श्रिंकेज चाहिए, वो क्वालिटी जो लोग बड़ा बड़ा ऑर्डर देता है उसके लिए इवन प्रोडक्शन होना चाहिए और इन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। The reason to set up this park is the survival of the Ikkat industry. We, the like-minded people, joined together and have set up a common goal to make the industry more sustainable and safe.
taka